Okay. So what are the factors on which adsorption of gases on solid take place? The first is nature of the adsorbent. So which is the adsorbent here? Nature of the adsorbent. Adsorbent is the gas or the solid? Adsorption किसके किस पे हो रहा है? Solid. So adsorption is adsorption of gas on solid, right? Yes. So nature of adsorbent. Adsorbent is the solid, okay, and adsorbate is the gas. Now we'll talk about the nature of gas in the next point. The first point is how does the आपका सॉलिड कैसा है उस बात पे कैसे डिपेंड करता है कि आपका एड्सॉर्प्शन कितना होता है. व्हाट इज एड्सॉर्प्शन? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज एड्सॉर्प्शन? क्या था एड्सॉर्प्शन? यू डोंट हैव टू टेल मी द एग्जैक्ट डेफिनेशन, बट यू जस्ट हैव टू टेल मी एड्सॉर्प्शन होता क्या है. बोलिए. Deposition of substance on a surface of another substance. Okay, so first of all, it's a surface phenomena, right? So Yes, sir. if you have a solid, you have an adsorbent whose surface area is large, so you'll have more adsorption or less adsorption. More adsorption. More. So the first thing is that the surface area of the adsorbent, larger the surface area, more Larger is will the, be the adsorption. yes, that's one thing. Then in our last class we talk about the porous nature. Porosity increases the surface area, right? Yes, sir. So the more porous the surface area is, More. More adsorption. more will be the adsorption. And the third thing is, if we can activate the adsorbent, right, adsorption will be more. Is all right? Yes, sir. So when we talk of nature of adsorbent, the first is the surface area. Larger the surface area, larger is the adsorption. Next is the porosity. Higher the porosity, more is the adsorption. And the third is, if you activate the adsorbent, adsorption is going to be more. ठीक है? Yes. So, Yes. Okay. Now, okay, now I remember what we were doing last time. Nature of the gas. इस गैस के बारे में हम लोग बात करते हैं. ये थोड़ा will divert. ये थोड़ा देखो. Last time when we started talking about this, I had asked this question, what is an ideal gas? तो आप लोगों ने कुछ जवाब दिया था. किसी को याद है? What was ideal gas? which obeys all gas laws. Okay, that is one definition. और दूसरा? ऐसा गैस है जिनके गैस मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी रिएक्शन अट्रैक्शन नहीं होता. कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है. नहीं होता. Okay, so ideal gas is one where you have one molecule of a gas and another molecule of gas, they don't have any interaction. Is this clear? Yes, sir. So what will be Yes, real sir. gas then? Real gas will have interactions between the Molecules. molecules. So now you have one molecule here and another molecule. There will be some kind of interaction between them. If you have some interaction, which gas it is? Real gas. Okay. Now, so ideal gas is no interaction. Now let's talk about real gases. Now say, let's say real gas 1, which has some interaction.
and the second is another real gas which has lots of interactions. So which gas is more real between 1 and 2? The second one. Second. Okay. And which one is more ideal? First one. First one. Please remember, this is not an ideal gas, but this real gas has a more characteristics Ideal gas. of an ideal gas. यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Abhi, now let me explain something, that what happens when you convert a a gas into liquid. See, now you have this gas. Okay. Now let me talk of real gas first. So will there be interaction between them? Yes. Yes. But we know that if the molecules are far from each other, whatever interaction they have, they'll be weaker. If you bring them closer, what happens? Strong interaction. Interaction will become more. So at some point, the interaction will become so big that a gas will be converted into liquid. Yeah. यहाँ तक, is this clear? Yes, sir. Yes. Okay. So when you want to convert a gas into liquid, I can do two things. I can increase the pressure. So what am I doing by increasing the pressure? I am bringing them closer. मैं स- मैं उसको चारों तरफ से दबा रहा हूँ, तो उसकी वजह से वो लोग जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के Close More. आएंगे. क्लोज आएंगे, राइट? सो वन वे ऑफ if you want to liquefy a gas, you have to either increase the Pressure. 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 And another way is I can decrease the temperature. इससे क्या होता है? See, when you have at a certain temperature, each molecule will have some energy, and according to the energy, ये इधर उधर भागता है. It runs around and here and there. So if you decrease the temperature, what are you doing? If you decrease the temperature, your Energy is less. Energy will reduce. energy will reduce, as a result of which they will not move a lot, Move. right? Yes. So forming an interaction is easier or more difficult if you decrease the temperature? It is easier. It's easier. So I can liquefy a gas by doing these two methods. I can either increase the temperature or Increase the pressure and decrease the temperature. correct, increase the pressure or decrease the Decrease. temperature. Now pay attention. Now I have real gas 1 which has relatively weak interaction. Now I have real gas 2 where the interaction is very much there, very high. Okay, so which gas is more real, 1 or 2? 2. 2. 2. यहाँ सबको समझ में आ रहा है? Yes. Sultan? Yes, sir. Sultan, she's there? Yes, sir. Yes, sir. Hey, what do your people in, your friends call you, or your family people? They call you by this entire name? My Huh? name is Shah Sultan. Yeah, but I know that. But Yeah. your friends also call you Shah Sultan, everything, all? Or is there a shorter name? No, the classmates, some girls say that Sultan only. Sultan only. So I'll also call you Sultan, is all right? Yes, sir. Yes, no problem. It's very long. Yeah. Okay. So Sultan, you tell me, which gas is more real? Gas 1 or gas 2? Gas 2. Gas 2. All right. Why gas 2 is more real? Why do you think gas 2 is more real? Because, yes, somebody can help her.
The interaction. Because there is more interaction as compared to the first gas. Correct. Now, again, I can also liquefy this gas. Yes. Forget, let's say I keep the pressure same here and pressure same here. Pressure is the same. So I have to liquefy it by by just cooling the temperature. Now this is the tricky part. You tell me which gas is easy to liquefy. When you are liquefying a gas, all you want is you want the interaction between the molecules to be so great that they convert from gas to liquid. Now you have to tell me with reason, with logic, that gas 1 and gas 2, which one is easier to liquefy and why? Yes, Gas 2. Arzu. You think gas 2 is more easy to liquefy beta? So Yes. gas one? नहीं नहीं, गैस 1 है, ये फिजा थी. Yes, sir. Okay, तो I have no problem with both the answers. You just have to tell me why. Arzu, you go first. Because so there'll be more interaction और pressure और temperature तो same decrease and increase हो रहा है. So interaction more होगा तो फिर it will convert ना. Easily or more difficult? Easier. Okay. Easily. Now Fiza, you go. Fiza. फिजा है, फिजा चली गई. फिजा मोमिन. आशा, Yes, sir. बोलो तुमको क्या लगता है बेटा? Second gas. क्यों? सर वो इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से हम्म, प्रेशर डिक्रीज जल्दी होगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज करने आया मतलब इजीली होगा. ओके. एक्चुअली सो जो गैस जो आसानी से लिक्विफाई होता है वो ज्यादा रियल है कि कम रियल है? ज़्यादा. जो गैस आसानी से लिक्विफाई होता है, अ गैस which can be liquefied easily is more real or more ideal? मोर रियल. More More real. real. Okay. And what is a real gas? Interaction between the molecules. बिटवीन टू The molecules मॉलिक्यूल्स. are capable of forming interactions. तो भी आप बताइए, आइडियल गैस और यू हैव टू गैसेस, आइडियल गैस एंड रियल गैस, which gas will adsorb more? On a solid, ideal gas will adsorb more or real gas will adsorb more? Sir, Real gas. sorry, network issue था इसलिए I left. कोई नहीं बेटा. So which if you have an ideal gas and a real gas, which one is more capable of forming interactions? रियल Real गैस. gas. तो एड्सॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा अगर आपका गैस आइडियल है या फिर रियल है? Real. अब दो रियल है, अब आइडियल गैस तो होता नहीं है, दे आर नो आइडियल गैसेस, राइट? तो रियल गैसेस में दो गैसेस हैं, जो एक कम रियल है, एक ज्यादा रियल है. कौन ज्यादा एड्सॉर्प्शन करेगा? ज्यादा रियल. ज़्यादा real. ज्यादा रियल है. और ज्यादा रियल हम लोगों को दिखता कैसा है? वो आसानी से लिक्विफाई होता है कि ज्यादा मुश्किल से लिक्विफाई होता है? आसानी से. आसानी से होता है.
ये सब समझ में आया, ये पूरा लिंक? यस सर। तो ये देखिए, अभी मैं आपको पढ़ के बताता हूं। गैसेस विच आर इजिली लिक्विफाइड, यहां पे आप लोग लिख सकते हैं मोर रियल की लेस रियल, more real. मोर रियल। तो आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में डालो, आप लोग बाद में यू विल रिमेंबर दिस, सो इट दिस विल बी more real, correct? Now gases which are more easily liquefied, which means which is more real, which means which has more interactions, and obviously they are more capable of forming interactions, will adsorb to a greater extent. Is this clear? यस सर। Okay. And what is a, now if I have, let's say, real gas 1 and real gas 2, how do I find out which one is more real? What is the criteria to find out which one is more real? Suppose real R1 is more real than R2. हमको कैसा पता चलेगा R1 is more real than R2? लिक्विफाई करेंगे तो हाँ, वो जल्दी हो जाएगा। जल्दी होगा। अब हम देखो, now pay attention here. When I say liquefy करना है, I am decreasing the temperature, right? यस सर And the temperature at which the liquid is converted into the gas is converted into liquid, okay? That okay. Does anybody know what is this critical temperature? These are all very important concepts. Look, I can, डू इट फास्ट एंड मैं सब छोटा कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग ये, किसी को मालूम है ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? above which it cannot be liquefied. करेक्ट। तो क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब क्या हो गया? गैस को लिक्विफाई करना आसान है। डू यू गेट दिस कनेक्शन? सो अ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर means the gas is easily liquefied, which means the gas is more real, so adsorption will be more more. More. अब ये देखिए, suppose chlorine has a critical temperature of 417 Kelvin and nitrogen has a critical temperature of, ये ऐसे हटाओ यार, ये critical temperatures क्या होता है? These are all critical temperature of 126 Kelvin. Which gas is more real, nitrogen or chlorine? chlorine Chlorine. Chlorine is more real chlorine, than nitrogen. देखिए now, so if you take 1 gram of charcoal, 1 gram of charcoal can absorb 235 centimeter cube of chlorine. However, the same amount of charcoal at the same temperature can absorb how much? 8 centimeter है Is this clear? Yes sir. यस Okay. सर तीसरा, टेम्परेचर। हम लोग आमतौर पे देखते हैं कि ओके, have we ever discussed what is the ली चैटले प्रिंसिपल? In FY maybe. Okay, do you remember? कोई नहीं। सो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो, एड्सॉर्प्शन इज नॉर्मली एक्सोथर्मिक। ओके, एड्सॉर्प्शन क्या होता है? सो योर मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग एड्सॉर्ब्ड हियर, इस समय हीट इज गिवन आउट, सो डेल्टा एच इज नेगेटिव, which means adsorption process is Exotherm. exothermic. So if you lower the temperature, adsorption increases. लिखो आप लोग ये, ओके?
आई विल टेल यू अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस सेम थिंग, लेकिन पहले तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। ज्यादा होता है। अभी देखो ये क्यों होता है, अभी हम लोग बात करते हैं। अभी ये देखो ये आपके गैसेस है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट हैपेंस, गैस के हम्म इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट एनर्जी हैपेंस, इंक्रीज, क्या होता है बेटा, सॉरी मैं सुना नहीं। गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है एनर्जी जिसके बढ़ वजह जाती है, एनर्जी बढ़ते तो क्या होते हैं, वो कहीं भी मतलब ज्यादा भागने लगते हैं। इंटरेक्शन कम होता अगर ज्यादा इंटरेक्शन भागने ज्यादा लगे होता तो है। एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा कि कम होगा, कम है, होगा। कम होगा। कम होगा ना। तो अगर आपको चाहिए कि एड्सॉर्प्शन बढ़ाने तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना कम पड़ेगा। करना कम कम पड़ेगा। करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। आया समझ में। यस सर। यस। तो सो दिस इज द, हाँ, adsorption as the temperature decreases adsorption increases, as the temperature increases adsorption डिक्रीज। decreases, ठीक है। यस सर। यस नेक्स्ट, सर। प्रेशर ऑफ द गैस। अब प्रेशर ऑफ द गैस क्या है, हम लोग ये वी हैव सीन दिस इन फ्रंटलिच, जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया था एड्सॉर्प्शन क्या हो गया था, किसी को याद है, द ग्राफ वाज समथिंग लाइक दिस, as you increase the gas pressure, this was pressure, this was amount of adsorption, as you increase the pressure adsorption, adsorption increases। इंक्रीजेस। लेकिन एक समय आता है जहां सैचुरेशन आता है उसके बाद एड्सॉर्प्शन नहीं होता है, ओके। सो नॉर्मली if you increase the pressure adsorption increases, okay। यस सर। यस सर। रिवर्सिबल नेचर, हम लोग ये भी we have already discussed this, that adsorption is normally रिवर्सिबल, यानी एड्सॉर्प्शन होता है, एंड व्हाट इज द रिवर्स प्रोसेस, यहाँ पे है डिसऑप्शन। डीसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन। ओके। सो in adsorption an equilibrium is established between the gas and the solid at the surface. For this purpose, for a given system the exact adsorption under condition is definite and reproducible, equilibrium is reversible, the adsorbed gas can be recovered by raising the temperature। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या किए, एड्सॉर्प्शन, टेम्परेचर बढ़ाया कम। कम तो होगा। कम हो कम जाएगा, होगा। so you will get the gas back। So the adsorbed gas can be recovered either by increasing the temperature or lowering the pressure, and this removal is called desorption। Exothermic process, we have already discussed here that adsorption is normally an exothermic process, and the heat evolved is called heat of adsorption। And last is specific nature. This is normally true for chemisorption. Adsorption of gases by solids may be selective. For the mixture of ethylene and coal gas, charcoal only adsorbs ethylene. Okay? यस सर। यस यस। सर। Okay. अभी कितने लोग आ गए, कोई देख के बता सकता है कितने हैं स्टूडेंट्स, 5 सर है सर। 5। 5 ही है, यस सर। और भी कम हो यस। गए थे ना अभी तो। नो सर इतने ही थे। नहीं नहीं नहीं, एक आध था। नो नो नो। यस मदिहा वाज देयर बट हाँ शी लेफ्ट आई गेस। ठीक है, वो लोग बाद में वीडियो देख लेंगे, आई विल अपलोड दिस वीडियो। यस सर। ओके नाउ लेट्स, हम लोग क्या करते हैं, लेट्स डू ओनली लैंगमूर, छोटा सा है, एंड विल बी डन फॉर द डे। ओके सर। लैंगमूर आइसोथर्म, ओके। मैं पहले, बिफोर वी रीड फ्रॉम द बुक, लेट मी एक्सप्लेन लैंगमूर आइसोथर्म का जो postulates है, assumptions है। It assumes that now
you're going to have adsorption. This is the adsorbent. And ऊपर से क्या आएगा? Adsorbate आएगा. Yes. ओके. सो लैंगमुइर का ये कहना है कि द सॉलिड सरफेस जहां पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, इट when you see from far it looks like a surface, but mainly it consists of ऐसे अलग अलग रूम. ओके. Yes, sir. So the the surface of a solid, it is nothing but individual some space which are very specific. नंबर एक, ये समझ में आया? Yes, sir. नंबर दो, all these individual spaces they are identical. यानी ये स्पेस और ये स्पेस एक दूसरे के एकदम बिल्कुल बराबर है. ओके. Yes, sir. तीसरा, when a molecule gets adsorbed, suppose यहाँ पे this neighboring space when it wants to adsorb, it does not depend कि बाजू वाला adsorb हो रहा है कि adsorb नहीं है. It acts independently of the neighboring spaces. या तो adsorb होगा या तो adsorb नहीं होगा. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. And the last part is the rate of adsorption will depend on free spaces. आप ये मानते हो? यानी फ्री स्पेसेस जितने ज्यादा होंगे एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा. ज्यादा होगा. इफ यूर ज़्यादा होगा. हाँ, अगर आपके ये जो स्पेसेस है ऑक्यूपाइड है तो एड्सॉर्प्शन कम होगा. कम होगा. सो द कम फाइनल होगा. थिंग इज दैट the rate of adsorption depends on the number of free spaces, and the rate of desorption will depend on what? Number of filled spaces. Number of I mean, occupied spaces. Number of Yes. occupied. Is this clear? Yes, sir. Okay, now let's just read from the Yes. book. अगर ये समझ में आया तो there's a small mathematics and we are done. The surface of a solid is made up of elementary spaces, and each space can adsorb only one gas molecule. ये उसका assumption है. ये कमरा है, एक कमरा में कितना गैस मॉलिक्यूल बैठेगा? Only one. One. Okay. All the elementary spaces are identical. Is this clear? Yes, sir. Yes. Third, the presence of a gas molecule on a given space does not affect the property of the neighboring space. This space, see, अब यहाँ पे देखिए, this space has two neighbors. Both the neighbors are, I am talking about this space. Both the neighbors are Identical. occupied. This Okay. also occupied, this also occupied, na? Yes. And suppose you have another elementary space where now I am talking about this elementary space. Both the neighbors are They are not unoccupied. occupied. But Langmuir says Unoccupied. the behavior of this space and this space will be the same. So the behavior of an elementary space, it does not depend whether its immediate neighbor is occupied or unoccupied. Means they're independent, right, sir? It is independent. Okay. Okay. Yes, sir. And next is because of the thermal energy. Now we keep talking about this. जैसे हम लोग ने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती, इंक्रीज होते हैं सारे. इंक्रीज हो जाएंगे, ज़्यादा इसलिए होगा. एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा. हम लोग उसको क्या बोलते हैं? Desorption. डिसॉर्प्शन. So
The adsorption process can be assumed to be consisting of two actions. One is called condensation. Condensation is जो adsorption होता है उसको हम लोग condensation बोलेंगे, right? And evaporation or desorption is the going back. At equilibrium, the rate of condensation of the molecule is equal to rate of desorption. Is okay? यहाँ तक Yes, सबको sir. समझ में आया? And Yes, sir. the adsorbed molecules are dissociated. ठीक है. Now let's do this maths. देखिए, theta, let's assume at any given point of time, theta is the fraction of adsorbent surface which is occupied. So what is theta? Fraction of adsorbent which is occupied. Fraction. What is the meaning of fraction of adsorbent? Fraction Means of some amount of adsorbent. नहीं, हम लोग ये फ्रैक्शन जो है ना, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में एक अलग तरीके से यूज करते हैं. फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ वन. Okay. यानी सपोज तुम्हारे पास यू हैव अ सरफेस, you have a surface which has, let's say, 1000 elementary spaces. Okay, कितने elementary spaces? 1000. 1000. Out of that, suppose 100 is occupied. So how much is unoccupied? 900. But this is not theta. Theta is this 100 is out of 1000. 1000. So the question is, 1000. out of 1, how much will be the answer? 10. 9.1. Out of 1. Okay. देखो, 100 occupied empty spaces out of how many total spaces? Yes, sir, understood. 100 is 1000. the number of occupied space out of total number of spaces 1000. 1000. 1000. If the total number of space is 1, how much is occupied? 0.1. 0.1. हम लोग, so whenever we say fraction, please remember it is out of 1. Okay, Yes, sir. so at any given point of time, if theta is a fraction of occupied adsorbed molecules, how many elementary spaces fraction will be free? 1 minus 1 theta. minus theta. So 1 minus theta. See, 1 जो है, it is because it is a fraction. So 1 minus theta will be free, right? Yes, sir. Rate of adsorption depends on what? Rate of, मैं ऐसा लिखते रहो, Free adsorption, spaces. adsorption is directly proportional to theta or 1 minus theta? 1 minus theta. रेट ऑफ एडसॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, फ्री पे कि भरे हुए पे? Free. फ्री. तो मेरा Free इसमें पे. फ्री कौन सा है? 1 minus theta. Okay, so rate of adsorption is directly proportional to 1 minus theta. Yes. And what about rate of desorption? On theta. Directly It's proportional directly to proportional theta. to theta. Okay, now इसको proportionality हटा है तो let's put some constant, let's say k1. k1 into 1 minus theta. यहाँ पे क्या करूं? K2 into theta. k2 into Theta. theta. At equilibrium, देखो आपका यहाँ पे था, ये नंबर 5th पढ़ो. If it is at equilibrium, what does it mean? K1 is equals to K2. Nahi Raja, this entire thing will be equal to this entire thing. What is this entire thing? One is rate of adsorption, one is rate of Desorption. 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 At equilibrium,
rate of condensation, which is rate of adsorption, is equal to the Rate of evaporation. rate of Yeah. evaporation or rate of desorption. So this is rate of adsorption is k1 into 1 minus theta. Rate of desorption is k2 into theta. At equilibrium हमारे पास क्या क्या टर्म होगा? k2 theta will be equal to K1 1 minus theta. ये K1 1 minus. ये समझ में आया? Yes, sir. ओके अभी आपकी किताब से यूज करते हैं. The nomenclature might be different, but the discussion is going to be the same. Blah blah blah. Okay. Rate of condensation. एक तो 1 by minus theta पे डिपेंड करता है, राइट? बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन Yes. प्रेशर ना. हम लोग ये देखें, जैसे प्रेशर बड़ा होता है तो एब्सॉर्प्शन बढ़ता है. बढ़ता है. सो रेट ऑफ कंडेंसेशन इज equal to k1 some constant into pressure multiplied by 1 minus theta. All right. Yes, sir. Rate of Yes. desorption will be equal to theta. So it is equal to k2 theta. K2 theta. At equilibrium, k1p 1 minus theta is equal to k2 theta. Right? Yes, sir. Let's open this bracket. So this Yes. becomes k1p minus k1p theta is equal to k2 theta. अब k1p इधर रखा, उसको उधर लेके गया तो ये प्लस हो जाएगा. You have theta common. You have k1p plus k2. Is all right? Yes, sir. Yeah. So theta is equal to Yes, sir. k1p divided by k1p plus k2. What is theta? What was theta? The Fraction amount, of. fraction of adsorbent surface, I mean, which is occupied. Which is occupied. Okay. So k2 is, theta is equal to ये value आया. Now the amount of adsorption will be directly proportional to the कितना एडसॉर्ब हुआ है वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कितना तुम्हारा एलिमेंट्री सरफेस ऑक्यूपाइड है. सो x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो क्या हो जाएगा? x बाई एम इज इक्वल टू k थीटा. नाउ Theta. दिस थीटा का वैल्यू फ्रॉम हियर टू हियर. सो x बाई एम कितने के बराबर हो जाएगा? सो x बाई एम विल बी इक्वल टू k k1 p divided by P. P. k1. P K1 P plus plus K2. K2. ठीक है. ध्यान रखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है. तो ये आ गया यहाँ तक है हम लोग. देन यहाँ पे क्या किए? You divided everything by k2, numerator and denominator. So numerator becomes k1 divided by k2. अब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? k1 by k2 plus 1. Is this step okay for everybody? यहाँ से Yes, यहाँ. sir. Yes, sir. Sultan, is it all right? Yes, sir. Okay. Asha? Yes, sir. Okay. अब ये जो कांस्टेंट है इसमें देखो सब टर्म कांस्टेंट है. इसको हम लोग ए बोलते हैं, अनदर कांस्टेंट. ये भी कांस्टेंट है, इसको बी बोलते हैं. दीज आर Langmuir constant. So x by m is equal to AP divided by BP plus 1. Okay, where A is equal to this and B is equal to this, and this is called Langmuir adsorption isotherm. And these are various ways in which you can find out the value of A and B. अभी देखिए. Now let's write this down. So you have x by m is equal to A
P P divided by, divide BP plus plus BP 1. 1. plus 1. ठीक है. If I get this P in the denominator, क्या हो जाएगा? A divided by, BP नहीं, okay, BP BP, plus 1 upon P. BP divided by P plus 1 upon P. आएगा ऐसा? Yes, sir. Yes. yes ये sir. कैंसिल हो जाएगा. सो x बाई एम कितने के बराबर हो जाएगा? A अपॉन, A upon B plus 1 by P. B plus 1 by P. अच्छा, B प्लस 1 बाई P. अब इसको इधर लेके जाते हैं. सो इट विल बिकम B प्लस 1 बाई P इंटू x बाई M इज इक्वल टू A. 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 ठीक है. Yes, sir. ओके. यहाँ पे क्या किया है? ओके. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली. हमारे पास क्या था? x बाई एम इज इक्वल टू ए A पी डिवाइडेड बाई P plus 1. बी पी प्लस 1. लेट्स टेक द रेसिप्रोकल ऑफ एवरीथिंग. तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x बाई एम इज इक्वल टू क्या होगा? बी पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई Upon AP. ए पी. AP. AP. Right? Now Yes. Yes. this p can come here. So this will become p divided by x by m is equal to, अब क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में क्या बचा? BP plus 1. b by a p प्लस 1. अपॉन ए है ना राजा? ये a किधर 1. जाएगा? Yes sir. So this can be considered to be y is equal to m x plus c. तो आपके जब ग्राफ में y एक्सिस में आप क्या ड्रॉ करेंगे? यू विल ड्रॉ P दिस divided by p डिवाइडेड बाय X x upon बाई M. x एक्सिस में आप क्या प्लॉट करेंगे? P. 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 आपका स्लोप क्या होगा? B by A. B by A. बाई a विल बी द स्लोप. एंड आपके y इंटरसेप्ट क्या होगा? 1 by A. 1 1. by 1 upon A. ठीक है. Yes sir. तो यहाँ पे Yes, देखिए, sir. अगर अगर आप देखेंगे, सो यू हैव दिस ग्राफ ऑफ p डिवाइडेड बाय x बाय m वर्सेस p. आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है. द स्लोप विल गिव यू b बाई a एंड द इंटरसेप्ट विल गिव यू 1 बाई a. ओके. Yes sir. yes, sir. There are, one second.